And today I'm very excited because we have in the room your CA buddy, CA Shubham Singhal. So let's all welcome him. Hi, Shubham. How are you? Hi, Achal. I'm very good. Thank you. What about you? I'm great. Thank you, Shubham. And I think this is a great interaction that is going to happen, and students are going to have a lot of insights because I see your fan following all over social media. So students को मजा आने वाला है ये session में. I'm excited. So Shubham, let's Same begin. here. Same here. Yes. So Shubham, let's begin with the first question, and that is who or what inspired you to do CA? So I think it was less of an inspiration. I think I'll tell you the inspiration. So my Tauji, in Hindi we call Tauji, मेरे पापा के बड़े भाई, he is a chartered accountant and he is probably the richest amongst all the brothers. There are six brothers. So yeah, he's the richest. So I thought I used to see his house. His house was the biggest we had, right? And he had three cars standing outside. And I'm like, कैसे आया ये सब? तो कहते हैं सीए. तो उस समय वो एक हवा चलती थी कि सीए बन जाओ, साइन करने के पैसे मिलते हैं। और मैं सोचता था यार मैंने इतने सारे पैसे वेस्ट कर दिए अपने रफ नोट्स में पीछे साइन कर करके, तो मैंने बोला अब सीए करते हैं। तो माई thought was that probably I want to grow that rich, and that is why I chose CA. And to be very honest, I was in 11th and 12th, I had taken science. Okay. So science में I didn't want to pursue anything after studying science in 12th. मेरे को समझ आ गया अब मेरे बस की बात ही नहीं है। मैंने माई डैड हैड अ ड्रीम कि मेरे को डॉक्टर बनना चाहिए। तो मैंने उनको जाके मैंने बोला कि नहीं हो पाएगा पापा, डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा मैं, मेरे को सीए करने दो। क्योंकि आसपास के रिलेटिव्स भी सीए ही थे, तो वही सुना था, तो मैंने बोला सीए करना है। तो दैट वे आई थिंक द जर्नी स्टार्टेड टू डू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। That's great. So I think this prompts another question, Shubham, and that is कि 11 12 science करने के बाद was it not difficult for you to actually adjust to commerce and accountancy? क्योंकि बहुत सारे students को इसमें problem होती है. तो what was your experience like? So I'll tell you, in my experience, most of the rank holders, if you see, have been from science background. At least the few ones I know have been from science background. So science actually made it easy. I will tell you how. Because I was not aware of a subject like accounts, I was scared. So when you are scared, being from a science background, you know how to work hard. तुमको पता है मेरे को दिन भर मेहनत कैसे करनी है. Or you know a subject is there, which everyone in the class knows, only you don't. So you know that you have to prepare more than others do. अदर पीपल मे बी दे आर सिटिंग, दे आर ओवर कॉन्फिडेंट प्रोबेबली कि यार ये सब तो 11 12 में पढ़ा था हमने, और हम ऐसे हैं कि नहीं यार पढ़ ले, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो आई थिंक साइंस से होने का मुझे फायदा ये हुआ कि मैं डरा हुआ था, तो और मेरे में मेहनत करने की शक्ति थी, तो उसका कॉम्बिनेशन बैठा एंड आई परफॉर्म वेरी वेल इन माई फाउंडेशन। क्योंकि चार सब्जेक्ट होते हैं फाउंडेशन में, दो तो सबके लिए नए होते हैं, एक होता है लॉ और एक आपका मैथ्स। चलो मैथ्स भी देखो साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए इजी होता है, तो आई थिंक दैट वे इट गॉट बैलेंस्ड। Right, and I think that's a good perspective because students इसको as a weakness लेते हैं, but आपने एक ही आंसर में उसको as a strength portray कर दिया है, so that's amazing, Shubham. Thank you for sharing that. Now, a lot of students wonder, All India rank 4, your CA buddy is All India rank 4, so why into teaching? I mean, the mundane options of getting into a big four, corporate job, starting your own firm, वो सारी चीजें छोड़ के आपने टीचिंग प्रोफेशन चूज किया है सो व्हाट वाज द रीजन? I don't know. Probably this is the first time I'm saying this, but I feel like saying is I don't think I chose teaching. I think teaching chose me. I don't think it is something that you make happen. I feel that it's been almost 3 years since I'm teaching, but it's been almost 7 to 8 years since I've been wanting to teach. Okay. So I remember back in my intermediate also, back in 2015 also, I used to teach my friends and I was very happy. You know, it used to give you a sense of energy. It used to give you a sense of happiness. So I think that gradually happened, and your question itself had the answer. You used the word mundane, right? So I never liked auditing. I never liked anything. I in fact hated job. And being from a बनिया background, my dad used to be like, तू आके दुकान खोल लेगा, मैं तेरे को थोड़े से पैसे दे दूंगा, तो तेरा उसमें खाना पीना चल जाएगा। तो मेरे को ऐसा था नहीं जॉब का। एंड सी आई रियलाइज्ड, फॉर दोज हु नो माय स्टोरी, इट्स अ वेरी लॉन्ग वन ऑल्दो, तो जिनको पता है उसमें उनको समझ आता है कि थिंग्स happened in a certain way that it led to teaching. So after I cleared my CA finals, I didn't immediately land on a 25-30 lakh rupees job. I had to take a break of 6 months. Okay. That break of 6 months brought me down to 10-12 lakhs of package. अब आप समझो 10-12 लाख में मैं कहाँ खुश होने वाला हूँ, जबकि मेरे को सपने दिखाए गए थे 25-30 लाख के। ऐसा नहीं कि 10-12 लाख कम होते हैं, पर मैंने तो 25-30 लाख के सपने देख लिए थे ना, तो मेरे को समझ आया कि ये अच्छी चीज हुई कि मेरे को 10-12 लाख की नौकरी रही।
तो मेरे को मोटिवेशन रहा, यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू बिल्ड समथिंग बेटर। अगर मेरे को 30 लाख की नौकरी मिल जाती तो शायद मैं दिन भर खट करके जितना पैसा कमा रहा होता उससे खुश होता। सो आई थिंक थिंग्स हैपेंड एंड teaching chose me ultimately, and that is why I became a teacher. That's a great answer. Now, I want to understand कि देखो रैंक obviously मैटर करता है स्टडीज में, एकेडमिक्स में, टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। जब आप फाउंडेशन में रैंक लाते हो तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि इंटर में भी लाना है, फाइनल में भी लाना है। बट जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो और आप मार्केट प्लेस एंटर करते हो तो रैंक की क्या अहमियत है? लाइक डू यू गेट डिफरेंशिएटेड? हाउ डू यू गेट ट्रीटेड व्हेन यू आर अ रैंक होल्डर एंड स्पेशली इन अ सिंगल डिजिट रैंक? See, first of all, I got a very surprising message yesterday. Okay, there was this rank holder, I think 14 or 40, I don't remember exactly. He texted me something, sir. I appreciate you a lot, and why the reason was that you don't differentiate between 1, 2, 3 and the other rank holders. And I realized who the hell is doing it and why the hell are they doing it. Like I feel AIR 1 and AIR 50. I'll tell you why. When it comes to job opportunities, for every rank holder, all the door opens. मतलब आपको कोई भी इंटरव्यू में जाना है, आपको मैरिको में जाना है, आपको आदित्य बिरला ग्रुप में जाना है, इफ यू आर रैंक होल्डर यू विल गेट इंटरव्यू। अब उस दरवाजे में घुसने के बाद फिर आपका एआईआर 1 हो, आपका एआईआर 50 हो, फर्क नहीं पड़ता। आई टेल यू समथिंग, आई रिमेंबर दिस इंसिडेंट दैट हैपेंड विद हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सारे रैंक होल्डर्स का इंटरव्यू लेने के एक दिन पहले एक्सक्लूसिवली एआईआर 1 का इंटरव्यू लिया था। Just AIR ones, okay? They wanted to hire them, so they specially gave them tickets. They brought them down to Mumbai, interviewed them, and rejected them within next 30 minutes. And on the next day, AIR 45, AIR 47 got selected in HUL. HUL is probably a dream company for a CA. अगर आप जाओगे वहां के ऑफिस में तो it's a dream company. So I feel that single digit rank is okay, but it is fine. Every rank holder is a success. Every chartered accountant is a successful person. But coming down, how does it help? To be very honest, it helps significantly because it becomes easy to get an interview. Because अगर मैं अपना CV कहीं पे भेजता हूँ versus a first attempt या multiple attempts वाला कहीं CV भेजता है तो मेरा CV of course ऊपर रखा जाएगा. Can't blame them, right? That's how you filter. Even when we hire people, we tend to, filter on their strengths, right? So that happens, fortunately for rank holders. And even if you are if you have scored well, like 400, आप समझ लो अभी 6 सब्जेक्ट है तो आपके 420 है, 400 है, तो इवन देन यू क्रैक इंटरव्यूज। सो आई थिंक देयर इज डेफिनेटली एन एज, बट देन अगेन यू compete with a different level of people. So I'll tell you, मेरे को मैरिको का इंटरव्यू आया था, ठीक है, एंड आई एंटर्ड द premises and I'm like, now you are surrounded in a room which is filled with 100 people. The difference is that all of them are chartered accountants. Even more, all of them are all India rank holders, ठीक है। तो नाउ एंड कितनी प्लेस है मैरिको के पास? एक सीट। मैरिको एक जन को हायर करेगा 100 में एक। अब उसमें प्रॉब्लम समझो, 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे बचपन से पैदा हुए होते हैं कि उनको सारी जॉब्स मिल सकती है, उनमें डिग्रीज भी होती है, उनमें स्किल्स भी होता है, उनमें टैलेंट भी होता है और वो डिजर्व भी करते हैं। पर वो लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है? वो पहले जाते हैं एचयूएल में, वहां की सीट खा जाते हैं, उनको रिप्लाई नहीं करते, फिर जाते हैं मैरिको में, वहां की भी सीट खा जाते हैं, और जाते हैं गोदरेज में, सीट खा जाते हैं। अब जब मैं मैरिको में घुसा तो मैंने 3 लोगों को देखा, मैंने बोला ये लोग यार, इनका तो हो गया ना एचयूएल में, तो वो यहाँ पे भी सीट लेने आए थे। तो आई एम लाइक, तुम कर लो ना, फिर हमको बुला के टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो तुम? भाई ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, तुम डिसाइड कर लो। So again, you may be a rank holder, but the level increased again, right? So I think that is where problems comes into picture. But I think again, it's all interesting if you enjoy it. Yeah, and as they say, this is a good problem to have, right? So काफी This is a सारे good, students, exactly, yeah, सारे students यही yeah. बोलेंगे कि this is a good problem to have. So I think, and again, you've given a perspective, Shubham, that a lot of students may not look at कि देखो हमको डिग्री तो सेम ही मिल रही है, चाहे तुम फर्स्ट अटेम्प्ट सीए हो, रैंक होल्डर सीए हो या मल्टीपल अटेम्प्ट सीए हो। ICAI never differentiates. So I think it's time for students to also start thinking that, I am not going to differentiate whether I'm a rank holder or am I a multiple attempt chartered accountant. If I am a chartered accountant, I have to go with that confidence कि मुझे ये इंटरव्यू क्रैक करना है, मुझे ये जॉब डिजर्व, आई डिजर्व दिस जॉब। I think that attitude will help them. Right. So, still there is a craze of ranks, Shubham. So I have to ask you this. What are the top 3 things according to you that, are essential to score good marks? चलो रैंक की बात ना भी करें तो अच्छे मार्क्स अगर लाने हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, थियरी हो, प्रैक्टिकल हो, what are those 3 qualities that a student must have? I have the answer. I think number one is consistency. Easier said than done. A word that everyone knows and no one follows. Okay, it is consistency. You find out any successful people anywhere, you will see that they are consistent. You find a LinkedIn person, a LinkedIn what do you call, influencer, and he has like 400K, 500K.
The only thing that he's doing is he's consistent. Some days he writes wonderful posts, some day he screws up, but he doesn't give up. Same goes for YouTube. Consistently posting videos. Instagram, consistency. Anything you do requires consistency. Anything. Even in your preparation leave, आपको समझना पड़ेगा एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए, उस खुशी में 4 दिन बर्बाद करते हैं ये लोग. तो वहां पे कंसिस्टेंसी नहीं होती है, वो लानी जरूरी है सबसे पहली. दूसरी आई थिंक विल पावर. अगर मैंने सोचा सुबह 6 बजे उठना है तो मेरे को नहीं उठने के 100 बहाने मिल जाएंगे, पर उठने का एक कि भाई तूने सोचा है, तू कैसे मुकर सकता है अपनी सोच से. तो सेकंड इज विल पावर एंड द थर्ड वन आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, इमोशनल स्ट्रेंथ. सो पीपल फेल टू डील विद देयर इमोशनल ब्रेकडाउन जो उनके प्रिपरेशन लीव में होता है. मतलब कभी नहीं टारगेट्स मीट हो रहे, 3 दिन टारगेट मीट नहीं हो रहे, दे गिव अप, दे बिकम इमोशनली वेरी वीक, दे स्टार्ट क्राइंग, दे स्टार्ट. इट्स नॉट बैड टू क्राई, बट व्हाट्स बैड इज यू डोंट ट्राई टू कम बैक. किसी में ताकत भी नहीं होती है. तो आई थिंक इमोशनल स्ट्रेंथ इज समथिंग दैट ऑल्सो नीड्स टू बी डेवलप्ड ओवर टाइम, बिकॉज honestly the more I talk to CA students I realize that boss, this is not just a game of hard work. This takes so much out of you, so much of emotions out of you, that you have to deal with all of it. Absolutely. And I am a witness to that, Shubham, because I had a very tough journey as a chartered accountant. जब मैं CA student थी, I had nobody to guide me. हमें ना एक आदत पड़ जाती है स्पून फीडिंग की, राइट? बचपन से बताया Right, जाता है ऐसे right. पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो. CA में आने के बाद what is competitive exam? The pressure of competitive exam, expectations of parents, खुद से खुद की expectations, peers की expectations, ये सारी मीट करने के लिए जो इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए, आई थिंक दैट इज लैकिंग. बिकॉज That is अगर lacking, yeah. रिजल्ट 20% आ रहा है तो दैट डजंट मीन कि बाकी 80% बच्चों ने मेहनत नहीं की है. मेहनत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन दोज 20% probably have these three things that you have just mentioned: consistency, willpower, and that emotional strength that is required to clear this exam. So very well put. Right. Now the next question is around your subject, and that is a subject that troubles a lot of students, but probably you are the king of that subject, and that is law. तो थियोरी है, पूरा कंप्लीट थियोरी है. काफी बच्चे बोलते हैं हमें नींद आ जाती है पढ़ते वक्त, प्रोविजंस याद नहीं रहते, सेक्शंस कैसे मेमोराइज करें, ये वो. सो why do you enjoy law, and are there certain tips and strategies that you can share that will make law fun and easy for them? Sure. So I will tell you, one of my teacher once told me that if you're a teacher, you can even teach history. Okay. अगर तुमको history भी पढ़ाने बोला जाए, geography भी पढ़ाने बोला जाए, even if you don't like it, you can teach it only when you're a teacher. So I think law is something which I think any subject. As a rank holder, I'll tell you something. When you are a rank holder at CA level, there is no subject that you dislike, because if you dislike that subject, it means you're not able to study. It means you'll not be able to score well. और आप किसी भी सब्जेक्ट में कम स्कोर लाओगे तो रैंक नहीं आती है. So for a rank holder, each subject is equally, interesting for them. But coming to law, I think when you said law makes you feel sleepy, I was yesterday, as we spoke before this call, you interviewed Yagya. I interviewed AIR 2 and AIR 3 together. And what AIR 3 mentioned that was very surprising for me. उसने बोला कि सर जब मेरे को नींद आती थी तब मैं आपका लेक्चर देखता था. आई डोंट नो यज्ञ ने बोला कि हिरेश ने बोला, बट जब मेरे को नींद आती थी तब मैं आपका लेक्चर देखता था. लाइक व्हाट, ये तो वो सब्जेक्ट है जो सुलाता है ना. But then I realized that it became very engaging for them. I think the reason why become law becomes fun with me is because of the age group. I tend to match my vibes with the students. I know what kind of jokes they crack and what kind of talks they do behind the scene. I just lived it. Saas bhi kabhi bahu thi. So I know all of it. And coming to law, how to make it fun and interesting, I have 3 methods that I have developed over time that can be implemented in every theory subject, including tax also. Number one is scribble. What is scribble? You basically, in order to pay attention, you write down whatever is being taught. So I tend to write along with the students. Okay. The second method is you need to frame the language, right? So there is a concept of DPQ, daily practice question. One of my colleague in CA Foundation helped me develop this. So I used to give a homework that one question a day, not much, not 5 questions, not 10 questions, not on weekends, every day one question with consistency. That used to help you develop the language. And the third one that I tried to develop was mind mapping. Mind mapping is आंखें बंद करो, मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा, आप अपने दिमाग में सिर्फ रिवाइज करो. So I think with these 3 things, major problems of the theory subjects get solved. So one is scribble to pay attention, DPQ to build the language, and mind mapping to retain it better. So I think it's all solved the problem.
राइट एंड आई थिंक आई मैच योर वाइब बिकॉज लॉ मेरा भी फेवरेट हुआ करता था व्हेन आई वाज अ सीए स्टूडेंट एंड all of these techniques are definitely implementable and they make law easy and fun. I just believe कि students को ना एक गुरु चुनना चाहिए जिसके साथ उनको Hmm. पढ़ने में मजा आता है. So I'm sure your CA buddy is the perfect one for that because a lot of students Thank you. enjoy your sessions. I've seen that all over social media. I've had the opportunity to also interact with a few of your students. So I think you're a blessing for them. Now, Thank Shubham, you so coming to much. our last question before we close, what is your advice for all the CA intermediate students who could not clear the May 24 exams and now they're preparing for the September attempt? A lot of them are feeling sad and heartbroken. Some of them expected it. Some of them, for them, it was a surprise कि हम fail कैसे हो गए. They're experiencing failure for the first time. So your last thoughts for them. So see, I'll be very brutal here, and probably I don't want to be called Ashneer Grover of CA, but I'll be very brutal here. Uh, कमजोर दिल वालों के लिए ये नहीं है, पर आप अगर फेल हुए हो तो सिर्फ एक ही चीज आपको करनी है, अपनी कमियां ढूंढनी है. आप अगर ये सोचते रह जाओगे कि मैंने सब कुछ किया, मैंने पूरी मेहनत करी, फिर भी मेरा रिजल्ट खराब आया, तो ये गलत है. आप में कुछ कमी थी. What is the easiest path to take? It was ICI who was wrong, it was the paper checker who was wrong, and it was everyone else who was wrong. What is the most difficult path that leads to success? That is, I was wrong. Maybe I need to correct myself. So I think a lot of people don't do that, but I have seen what happens is अगर एक बच्चा पहला अटेम्प्ट फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, तीसरा अटेम्प्ट में पास हुआ, अगर उसका कॉल आता है ना, मैं उससे पूछता हूँ कि क्या ऐसा किया अलग तूने. वो कहता है हमेशा कि सर मैंने ना फर्स्ट अटेम्प्ट में ये नहीं किया था, सेकंड अटेम्प्ट में ये नहीं किया था, थर्ड अटेम्प्ट में सर मेरे को एक्चुअल में लगा मैं पढ़ रहा हूँ, अब मेरे को एक्चुअल में समझ आ रहा है, जाके मैं पास हो गया. तो इवेंचुअली यू रीच दैट प्लेस वेर इन यू स्टार्ट लर्निंग मोर, एंड जितना चाहिए उतना आप सीखते हो. तो अभी किसी को भी ब्लेम करने की जगह सबसे पहले अपने में लो कि मेरे को मेरी कमी ढूंढनी है. इट्स लाइक अ गेम, आई हैव टू फाइंड माई वीकनेस एंड आई हैव टू सॉल्व इट. वंस यू डू दैट ओनली देन यू विल बी एबल टू क्लियर सितंबर, वरना फिर जनवरी दिखेगा. जो लोग आपको तो पता होगा, दिस इज सच अ विशियस साइकिल. बच्चे मई सितंबर जनवरी, मई सितंबर जनवरी में घूमते रहते हैं. जो भी घूमता है, क्या वो प्लान करके घूमता है कि नहीं यार मैं तो देख 4 अटेम्प्ट लगाऊंगा? नहीं, वो फेल हो जाता है अनफॉर्चुनेटली. व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज दे आर नॉट फाइंडिंग फ्लॉज इन देमसेल्व्स, राइट? सो आई फील इट्स टाइम टू इम्प्रूव. डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आपने करी है, पर उससे भी ज्यादा चीजें जो आपने नहीं करी है वो आपने करना चाहिए, वो आपने समझना चाहिए, ताकि इस अटेम्प्ट को आप मॉक टेस्ट की तरह नहीं, पूरा प्रॉपर पेपर की तरह लिख करके आओ. Absolutely. So, analysis of your past performance is the key here. Analyze करोगे तो उस पे कुछ action ले पाओगे. So, I say this राइट. to my students in my sessions always कि if you keep doing the same thing, you keep getting the same results. But अगर कुछ result अलग चाहिए तो तुमको कुछ अलग input डालना पड़ेगा. It's like computer. 2+2 डालोगे तो 4 ही आएगा. अगर तुमको आंसर 5 चाहिए तो 2+3 डालना पड़ेगा, राइट? So डालना पड़ेगा, it is the राइट. same in your CA exams. If you're expecting a different result, do something different in your upcoming exams. Now, राइट. Shubham, before we close, there's a quick rapid fire. ये surprise है. I'm just going to ask you 3 to 4 questions related to you and your personal favorites. So, are you up for the rapid fire? या डू हाउ मेनी डू आई गेट टू स्किप? None, because there are only 5 questions. Let's make it rapid. It's not the ओके. coffee with Karan wala rapid fire. Don't worry. I hope so. I hope so. You can ask me questions like what is your favorite subject and stuff, not other things. But sure, go ahead. All right. So let's start with your favorite food, Pasta. your favorite holiday destination. Goa. Who I would have said inspires Thailand, but I stepped back. I who inspires you? think my dad. What's your favorite subject? Law. And do you have a favorite student over the years that you've picked up? No, that's no. There are multiple favorites in each batch, but not a single favorite. Yeah, there are many who are very close to my heart, but not a single favorite. All right. Thank you so much, your CA buddy, for spending this time with us. I'm sure students are going to take a lot of insights from this session. Thank you so much. Thank thank you, Achal. Thank you for having me, and it was lovely to attend this session. Probably one of the best podcast I have ever had. I wish we could have taken this for more time. But yeah, thank you so much. And you guys are doing a wonderful work with all the mentorship and everything. Thank you so much for that. I think it helps our students also. Keep doing that. It's a great work. Thank you so much. Thank you so much.